Structure of HIV. The envelope of HIV consists of glycoprotein 120. This is glycoprotein 120. Then glycoprotein 41. These are the glycoprotein 41, and this is the lipid. So envelope consists of glycoprotein 120, glycoprotein 41, and lipid. The envelope consists of glycoprotein 120, glycoprotein 41, and lipid. Glycoprotein 120, glycoprotein 41, and lipid. Then this is the core. This is the core. You also have matrix. This is the matrix. This is the core. ठीक है, कोर में क्या क्या चीज़ें हैं? कोर में आरएनए है. सो दिस इज़ द सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए. कोर में आरएनए है. आरएनए के अलावा दिस इज़ द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. और भी वायरल एंजाइम्स होते हैं जैसे कि इंटीग्रेज और प्रोटीएज. सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ HIV. एनवलप में ग्लाइकोप्रोटीन 120, ग्लाइकोप्रोटीन 41 और लिपिड है. फिर मैट्रिक्स है. देन देर इज़ कोर. कोर में सिंगल स्टैंडर्ड RNA है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है. सो स्ट्रक्चर ऑफ HIV. Let's see the structure of HIV. HIV and other lentiviruses have a unique structure. They are spherical and 80 to 100 nanometer in size. The HIV virus is spherical and 80 to 110 nanometer in size. The envelope. HIV is a enveloped viruses. Is a enveloped virus. HIV is a enveloped virus. The virus is made up of lipid part. Lipid part is host cell membrane derived. Lipid part is host cell membrane derived. Then protein part. It has two components, glycoprotein 120. They are projected as knob like spikes on the surface. Glycoprotein 120 are projected as knob like spikes. Then glycoprotein 41 or GP41, they form the anchoring transmembrane pedicle. Glycoprotein 41 form the transmembrane pedicle. So first there is envelope. Envelope में lipid part होता है which is host cell membrane derived. प्रोटीन पार्ट में दो ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन 120 विच इज़ प्रोजेक्टेड लाइक अ नोब लाइक स्पाइक, और फिर ग्लाइकोप्रोटीन 41 विच इज़ द एंकरिंग ट्रांसमेम्ब्रेन peptide. Then we have nucleocapsid. Capsid is icosahedral in symmetry, made up of core protein. Nucleocapsid is icosahedral in shape. Nucleocapsid is icosahedral in shape, and it consists of core protein, made up of core protein. Inside there is dense cylindrical inner core. Inside there is a dense cylindrical inner core which encloses RNA, two identical copies of single stranded positive sense linear RNA, and viral enzymes like reverse transcriptase, integrase, and protease, which are closely associated with HIV RNA. तो एक तो एनवेलप हो गया, दूसरा चीज़ है न्यूक्लियोकैप्सिड. जो कैप्सिड है दैट इज़ आइकोसाहेड्रल इन सिमेट्री. The capsid is icosahedral in symmetry. The capsid is icosahedral in symmetry, made up of core protein. जो capsid है that is made up of the core protein. This is the core protein. This is the core protein. Okay, nucleocapsid is made up of core protein. Nucleocapsid के अंदर में there is a dense cylindrical inner core. There is a dense cylindrical inner core which encloses the RNA. There is two identical copies of single stranded positive sense linear RNA. So there are two identical copies of single stranded positive sense linear RNA. Two identical copies of single stranded positive sense linear RNA. और वायरल एंजाइम्स में वी हैव रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज
and protease which are closely associated with HIV RNA. दो चीज़ है, एक एनवेलप हो गया, एनवेलप में लिपिड पार्ट है, प्रोटीन पार्ट है जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन 41 और 21 आ गया, न्यूक्लियोकैप्सिड जो कि कोर प्रोटीन से बनता है, आइकोसाहेड्रल होता है इसका सिमेट्री, इसमें आरएनए हो गया। कैसा आरएनए? टू टू आइडेंटिकल सिंगल स्टैंडर्ड टू आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव सेंस linear RNA. Viral enzymes like reverse transcriptase, protease, and integrase, which are closely associated with the HIV RNA. So, this is the structure of HIV.